चलिए एक चीज आज समझते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। एक बच्चे का डिमांड था कि सर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे वीडियो बना दीजिए। जरा देखते हैं आज इस चीज को समझते हैं, बला क्या है डिस्टेंस, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। जरा समझते हैं पहले इसको, ये दोनों है क्या, क्लियर करते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। पहले इस बात को समझने के लिए जरा एक चीज समझते हैं। सपोज अ बॉय goes to a school। एक स्कूल है, सपोज करिए दिस इज अ स्कूल, सपोज दिस स्कूल इज सेंट माइकल्स। ठीक है, कोई बच्चा है, ये अपने घर से, होम से स्कूल जाने के लिए निकला। ये एक है शॉर्टकट रास्ता कि एकदम डायरेक्ट होम से निकले और चला जाए कहाँ, अपने स्कूल सेंट माइकल्स। लेकिन इस बच्चा के पास बहुत सारे ऑप्शंस है, जरा देखते हैं क्या क्या। सपोज हियर इज अ मॉल, यहाँ पे एक मॉल है। सपोज हियर इज अ restaurant। Suppose here is what, CCD, cafe coffee day। Suppose here is barbecue nation। इस बच्चे के पास बहुत सारा ऑप्शन है, ये हो सके मॉल मॉल हो करके भी ये संत माइकल जाए। सो ही हैज टू कवर दिस मच डिस्टेंस। सपोज ये बच्चा CCD पहले जाए, CCD के बाद ये मॉल जाए, और मॉल जाने के बाद फिर संत माइकल चला जाए। इसके पास और सारे ऑप्शन है, हो सके ये होम से मॉल जाए और मॉल से फिर संत माइकल जाए। हो सकता है देयर आर मेनी पॉसिबिलिटीज, ये हो सकता है होम से बारबेक्यू जाए और बारबेक्यू से फिर संत माइकल चला जाए। हो सकता है कि होम से रेस्टोरेंट जाए और रेस्टोरेंट के बाद ये मॉल चला जाए और मॉल के बाद फिर ये हो सके संत माइकल जाए। या हो सकता है ये होम से रेस्टोरेंट जाए और रेस्टोरेंट से संत माइकल जाए। देयर आर मेनी पॉसिबिलिटीज। लेकिन ये जो देखिए, ये लुक एट दिस पाथ, दिस इज द स्मॉलेस्ट पाथ फ्रॉम हिज होम टू द स्कूल। दिस इज द स्मॉलेस्ट पाथ फ्रॉम स्कूल to the home or from home to the school. So we can say the shortest distance is displacement। shortest distance is what, displacement। इस बात को थोड़े और समझते हैं। बाकी ये जो लंबे लंबे चीज है, तो यहाँ से एक कंक्लूजन हम ड्रॉ कर सकते हैं। we can conclude one thing, that all distances are not displacement, but all displacement are distances। ये हम बोल सकते हैं कि नहीं, जरा ध्यान दीजिएगा। all distances are not displacement but all displacement are what, distances। जरा आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। एक चीज और बताता हूँ, distance is a scalar quantity। what, scalar quantity, but displacement is a vector quantity, distance is a scalar quantity but displacement is what, a vector quantity। अब जरा इस बात को ध्यान से समझते हैं कि डिस्टेंस क्या है, कि स्केलर क्वांटिटी है, बट डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट, अ वेक्टर क्वांटिटी। अब होता क्या है, जरा समझ लेते हैं एक बार। व्हाट डू यू मीन बाय अ वेक्टर क्वांटिटी एंड व्हाट डू यू मीन बाय अ स्केलर क्वांटिटी। ध्यान समझिएगा।
वेक्टर क्वांटिटी वैसे क्वांटिटी को बोलते हैं जिसके पास मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन भी हो, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड भी हो एज वेल एज डायरेक्शन भी हो, लेकिन इसमें मैग्नीट्यूड हो बट डायरेक्शन इज नॉट नेसेसरी, देन दैट क्वांटिटी इज नोन एज व्हाट, अ स्केलर क्वांटिटी। और ये भी नहीं, ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को भी अप्लाई होना चाहिए, तो वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे व्हाट डू यू मीन बाय वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। जरा इस बात को ध्यान से समझते हैं। सपोज वी हैव टू, दिस इज द वेक्टर फ्रॉम होम टू द स्कूल। अगर हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करना है तो हम लोग वेक्टर क्या बनाएंगे, फ्रॉम होम टू व्हाट, स्कूल, फ्रॉम होम टू स्कूल। सो दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। व्हाट, डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारा, एक वेक्टर क्वांटिटी है, बट डिस्टेंस इज व्हाट, अ स्केलर क्वांटिटी। तो ये स्पीड देगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, बट वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। सो रिमेंबर वन डिस्टेंस कि वेलोसिटी इज अ not a scalar quantity, velocity is a vector quantity, but we can say that the speed is what, a scalar quantity. So there is a large difference between a speed and a velocity. Okay, so let us see some example to understand in a better way what is the difference between a distance and a displacement. So let us take a good example to understand this concept. Let us take an example. Suppose a body a body from point A moves in a semicircle to a point B. This is the case number 1. This body again comes to points A. Suppose I am drawing, these all are the radius of what, a circle. Suppose this is point C and this is what, point D. Suppose I am, from this figure I want to solve many questions as required to understand the concept of distance and displacement. So we will see here carefully that from this question I will give you the fabulous concept so that you can understand the distance between the difference between a distance and a displacement. So let us see. Suppose first question is, what is the distance, what is the distance when a body moves from point A to point C, and also calculate displacement. So let us see this example. Example number first question is that a body from A, it goes to point C in like this. So you have to calculate a distance and a displacement. So let us see how to solve this problem. As I have already told you that distance is the actual path covered, actual. So actual path is the quarter of the circle. So we know that circumference of the circle is equal to 2 pi and radius, but it is covering 1/4, so distance is 2 pi r by 4. So the actual distance is what, pi r by 2, and you have to calculate the displacement. I have told that the displacement is the shortest path, means shortest path between the point A to C. Suppose I want to draw a shortest path. This is the shortest path from A to C. This is the shortest path, and this will give what, displacement. Suppose I want to calculate what, displacement. So let us see how to calculate it. I want to calculate displacement, then see how
I am going to calculate what? Displacement. So let us see carefully. This is a 90 degree or not? Yes, this is of course a 90 degree. You will and this is, suppose the center is what? O. See, in triangle, in triangle AOC, okay, by Pythagoras theorem, you have studied the Pythagoras theorem, r square plus r square, yeah, we can write that r square plus r square is equal to what? AC square. You can write or not? Yes, of course we can write. AC square is equal to what? 2r square. So we can say that, AC is equal to root 2 r. Of course AC is equal to what? Root 2 r, and this AC root 2 r is what? A displacement. So displacement is what? Root 2 r. Now let us solve the second question to understand the concept in a better way. Now let us see the second example. Second question, question number 2. Now let us see the what? Question number 2. Look at the question number 2. The question number 2 is a body goes goes from point point A to point B. Same question. Calculate distance and displacement. It is so easy. Let us take. Means this time the body, see here, this time the body is going from A to point what? B. Okay, means distance is very easy. You can calculate easy. Distance is equal to what? 2 pi r divided by 2. Means distance is how much? Pi r. Okay, now you have to calculate what? Displacement. Displacement is also so easy. We will see the for example, and displacement is equal to shortest distance between A and B. This is the shortest distance. You can see this is the shortest distance between point A to point B. Means this is r plus r, that is 2r. This is what? A displacement. Now we will discuss the question number 3rd. See carefully. See carefully. Question number 3rd. Now the body is going from point A, and again came to the starting point A. Then you have to calculate the distance and displacement. मीन्स कि बॉडी ए से चलना शुरू किया और ये सर्कुलर पाथ में चलते 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 ये ए पॉइंट पे आ गया. मीन्स द बॉडी started from point A and came to the same point A after covering a circular path. It means the starting point and the end point are what? Same. You have to calculate what? Distance. So see it. Distance is here what? Sir, distance is equal to circumference of circle. Distance is equal to what? Circumference of circle. Means distance is equal to circumference of circle is equal to 2 pi r. Now you have to calculate displacement. Now you have to calculate displacement. See here, the distance between point A and point A is how much? There is no distance. Means there is no shortest distance between the point A and point A, because the point A coincide with each other. It means the distance between the point A and point A is what? 0. So displacement is what? 0. I am giving you one question as a homework. You have to write the answer in a what? Comment box. In a comment box. See the what is the question. A body start from point A
and goes to the point D in a circular path. Then you have to calculate the distance and displacement covered by the body from point A to point D. In next video, I will show you the graph between distance and displacement, and you will solve the three equation of motion, that is S is equal to ut plus half at square, v is equal to u plus at, v square is equal to u square plus 2as, and how to deal the problem with graph. So stay tuned with us, follow our channel, share it, subscribe it. You will definitely get a benefit from this channel, I am telling you.